Welcome everyone. Welcome to our physics Wallah PW family. Uh, Today we'll go for our sessions jota climatology achi part 2. But before that, I'd like to say, before that I would like to say that we are from PW OPSC Wallah Tabu. We are going to provide an celebration offer that is for all of you. A celebration offer that is to the variety of courses we are providing. Yes, Swarnapriya, good afternoon. How are you? Good afternoon. Aishwarya, how are you? Okay. ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ? Voice ଟିକେ ହଁ. Now it's okay, Swarna. Now voice is okay. Is it okay now? Swarna, is it okay? Voice is audible now. Let me know. Yes, thank you. Okay. So Independence Day, just कह Independence Day, we are all over India. We are celebrating our Independence Day, and today, जदि मु कहबी कि from our PW family, we are launching your celebration offers for your Independence Day. Yes, Ankita. Good afternoon. Good afternoon, Rajpati. Good afternoon. Okay, welcome everyone to our YouTube sessions. Independence Day we are providing the massive celebration offers जोटा कि बहुत exciting offers अच्छे तमन पे. You'll see that we are providing this batch course जब हम देखिए सक्षम batch जोटा कि we are only we are providing in 3999. Can you imagine this kind of things where Saksham batch is basically your PT cum main civil service fine. Civil service those who want to fulfill their dream, you can go through this Saksham. Okay, only 3999 jota ki is an it's an huge opportunity for all of you because price is very less, and in fact education can be accessible. Everyone can afford the quality of education. PW taraf jota ame provide करछु. Then जदि हम देखो across batch जोटा कि already start हे जाइछि, there is only 1399, and Odisha exam Mahapack, that is only 999 only. Udanti High Court, Udanti जदि देखियो that is High Court ASO batch ପାଇଁ, High Court ASO batch ପାଇଁ, that is Udanti, that is only available in your 899, and your Unity Integrity OPSC batch for prelims, that is 3499. Okay, 3499 जदि देखियो. Then Odisha combo pack जदि मु कहबी, just a minute. Odisha combo pack, that is also we are providing. Just a minute. Odisha combo pack जदि मु कहबी, that is also police combo pack, that is only 999. जो एई सब जो facility, and also unity integrated batch also we have started, that is 3499. जदि हमें देखिबा एगुडा only Independence Day ପାଇଁ offer गुडा provide होची. Only Independence Day रे celebration जदि मु कहबी, okay, massive scale रे एटा जो समस्त को करा हैची, this is really a good, जदि मु कहबी, it's an good opportunity for all of you. Okay, just a minute, just 1 second. Okay, so this is जदि मु कहबी एते सारा facility एते batch रो, that will be only Independence Day offer ta. This is a real, okay, जदि मु कहबी, it is a real your opportunity for all of you to grab the course at a very, okay, very affordable rate. Okay, so grab it. और this is so exciting offers. We'll start kariba, that is, yes, good afternoon Bindu, how are you? Good afternoon Bindu, how are you? केमती अच्छो सबू?
नेक्स्ट देखिबा आज हम स्टार्ट करबा क्लाइमेटोलॉजी पार्ट 2 रे हला जेटा हम पढुतले एंड आल्सो वी आर विल डू योर PIQs आल्सो लीजा ओके ओके लीजा ओके गुड वेरी गुड क्लाइमेटोलॉजी ऊपर जदि म कहबी क्लाइमेटोलॉजी इज बेसिकली जोटा कि हमर ऑलरेडी हमर जो बैच जदि मु तुमको कहबी अक्रॉस बैच रे ऑलरेडी आ यूनिट इंटीग्रेटेड ऑलरेडी स्टार्ट ही जाइछि हला आगु को मु कहबी सब क्वेरीज जदि हला मु कहबी सब गोटे बैच रे एक्सप्लेनेशंस करबी ओके वर्तमान देखिबा प्रणाम लिप्सा हाउ आर यू गुड ओके ओके अंकिता क्लाइमेटोलॉजी विषय जदि मु कहया पूर्व जदि कहबी त माने समस्त रेगुलरली जमति कहे 6, 8 एंड 11 क्लास रे एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी जोटा कि पढ़ो ओल्ड एनसीईआरटी इज रियली गुड ओल्ड एनसीईआरटी दैट इज मु कहबी तम मानकू पर्टिकुलरली 2010 ओके 2010 जदि देखिबो ईयर दैट इज गुड हला 2010 रो 2012 भीतर देखो दैट इज आल्सो गुड हमर पढ़िया पे बेटर रहबो हला ईयर 2000 ईयर ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस फ्रॉम मैंडेटरी एंड दिल्ली न्यूज़पेपर रे मु जदि पुनी कहे दैट इज द हिंदू हला द हिंदू इज बेस्ट एंड योर जदि कहबी हला द हिंदू परे जदि नेक्स्ट जदि देखिबो दैट इज योर आई विल सजेस्ट योर इंडियन एक्सप्रेस ओके दैट इज योर इंडियन एक्सप्रेस विल गो फॉर दिस वन ओके इंडियन एक्सप्रेस आल्सो गुड एटमॉस्फेयर हम पढ़ी थिले आज भी तुम देखिबे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट इज इंसोलेशन आई एम आल्सो गुड लिप्सा थैंक यू गॉड ब्लेस यू थैंक यू इंसोलेशन बुझिले हमें कौन बुझिबा इंसोलेशन माने द अमाउंट ऑफ सनलाइट और क्वांटम ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन द अर्थ सूर्यंकर केते रश्मि ऊपर पडुछ केते अर्थ रिसीव करछ दैट इज कॉल्ड योर इंसोलेशन दैट इज कॉल्ड योर इनकमिंग सोलर रेडिएशन इंसोलेशन माने पर्टिकुलरली म कहबी इट इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन हला जोटा हमको पडुची गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ हाउ आर यू इनकमिंग सोलर रेडिएशन किछि इनकमिंग सोलर रेडिएशन तमे कोन भाबुछो कि सबु जांक इनकमिंग सोलर रेडिएशन अर्थ जोटा पडुची अर्थ सबु ऑब्जर्व करची नो प्योर हला जदी कहबी 35% जदी अर्थ ऑब्जर्व करची हला आउ बाकी रिफ्लेक्ट हे होछ और वी कैन से जदी ग्राफ रे जदी 50% ऑब्जर्व होची और 50% रिफ्लेक्ट हे होछ बैक दैट इज योर रिफ्लेक्टेड बैक माने की करचोंदी क्लाउड्स करची ओके एंड सम आर जदी रिफ्लेक्टेड आउ भीतर की पोलेंस ठीक अछि पोलेंस आउ डस्ट पार्टिकल्स समान भी करंती तो इंसोलेशन विषय जानिबा कोन द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज नोन एज इंसोलेशन हला इनकमिंग सोलर रेडिएशन को इंसोलेशन कहा जाए ओके हला इट इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स माने यदि कहबी एटी डायग्राम आकार रे शॉर्ट वेव्स कौन शॉर्ट वेव्स लॉन्ग वेव्स माने एटी हली मु सन बनेली दिस इज सन सूरज चाचू दिस इज सन दिस इज योर सन दिस इज आवर अर्थ ठीक अछि अर्थ ठीक अछि सूर्य के पाखर जो किरण गुडा आछि दैट इज योर इन टर्म्स ऑफ योर शॉर्ट वेव्स दीज आर कॉल्ड योर शॉर्ट वेव्स हला शॉर्ट वेव्स यू कैन से दिस आर योर शॉर्ट वेव्स इनकमिंग सोलर रेडिएशंस हला इनकमिंग वी कैन से इनकमिंग solar radiations ठीक अछि इनकमिंग सोलर रेडिएशंस अर्थ जोड़ा जाउची दैट इज आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस अर्थ जोड़ा जाउची आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जोटा कि हला आउटगोइंग रेडिएशंस फ्रॉम अर्थ देखंती आउटगोइंग रेडिएशंस हला आउटगोइंग रेडिएशंस फ्रॉम द अर्थ हला जोटा कि कहवा जाए रेडिएशन फ्रॉम अर्थ जोटा कि जाउची हमर कोथरे जोटा लॉन्ग वेव्स कहवा जाए हला सो एटी तुम जानि परलो शॉर्ट वेव्स और लॉन्ग वेव्स ओके सो आवर अर्थ सरफेस रिसीव्स रेडिएंट एनर्जी इन द रेट ऑफ केते 2 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनिट एटा हला तांका यूनिट है ठीक अछि एटा अर्थ जोटा रिसीव होची एटा हला तुमरो 2 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनिट गोटे मिनिट रे स्क्वायर सेंटीमीटर रे एते रिसीव होची ठीक अछि जदी म एटी नेबी केते स्क्वायर सेंटीमीटर 2 हला 2 सेंटीमीटर दैट इज जति रेनफॉल पडुछ जोटा हला दैट इज हला तमर केते एटी ए एंड बी दिस इज एरिया रे हला एटा हला तमर पर्टिकुलरली रिसीव्स आगु देखिबा पुनी गोटे एग्जांपल नेली अफ्रीका कंटिनेंट रो हला अफ्रीका कंटिनेंट को नेली ठीक अछि
सुश्री रोजालिन सर लानिना एलिना टिके डाउट अछि बिल्कुल हला रोजालिन पचारले लानिना आउ एलिनो कोन बिल्कुल हला लानिना जदि मु कहबी कोन लानिना आउ एलिनो लानिना आउ एलिनो ठीक अछि लानिना आउ एलिनो हला इज बेसिकली एलिनो जदि मु कहबी इट्स ए warm current ठीक अछि warm current particularly warm current एटा हला से cold current basically ठीक अछि ला एलिनो जो कोन हुए इंडियन सबकंटिनेंट हला इंडियन सबकंटिनेंट कौन परे सबकंटिनेंट रे सबकंटिनेंट faces or encounters कहबी faces or experiences कौन drought ठीक अछि drought or less rainfall जदि कहंती ठीक अछि less rainfall हुए है एटी कौन हुए because of La Nina more rainfall है more rainfall ठीक अछि एटी कौन हुए listen it's basically Peru side the current the current Peru side the current is ठीक अछि warm current basically जदि मु कहबी Peru side the current is La Nina रे cold current and Indian Ocean side कौन हुए warm current ठीक अछि सेपटे तमर रहइबो cold current आ एपट रहइबो हमर warm current से जो कौन हुए ठीक अछि वर्षाटा भलो हुए हमर एपटे ठीक ऑपोजिट पेरू साइड ठीक अछि पेरू साइड हला तमर warm current है पेरू माने साउथ अमेरिका warm current and cold current at Indian Ocean तो ये जो कौन हुए हमर एटा पड़ले सुखा पड़े मन रख वर्षाटा हुए सो दिस इज द डिफरेंस ओके ठीक अछि एति खाली जानो दिस इज नॉर्मल दिस इज वेरी सिंपल कोल्ड करंट एटा गोटी कोल्ड करंट एटा हला वार्म करंट आ ए जो कोन हुए इंडिया रे हमरो भलो वर्षा हुए लानिना ए वर्ष जोटा करा है इंडिया रे वर्षा होचे एटा लानिना पाई बहुत वर्षा हो अगस्त सितंबर बहुत वर्षा हो बुझिएला सुश्री ठीक अछि अमिया यस ठीक अछि ओके ओके गुड सो एटी हम कोन देखिले आ पूर्वटा हम कोन देखुतली इंसोलेशन अफ्रीका रे केतिके इंसोलेशन आसी राइट ओके कुंदन ओके सो इंसोलेशन कौन तुम देखियो अफ्रीका इज बेसिकली सबुठ जेतिकी कंटिनेंट अच्छी सबुठ गरम कंटिनेंट किए इट इज अफ्रीका इज द है हॉटेस्ट कंटिनेंट जदि कह जाए है अफ्रीका पार्ट रे देख ठीक अच्छे दिस इज कंप्लीटली योर जदि मुझे कहबी दिस इज योर सहारा डेजर्ट ओके दिस इज योर सहारा डेजर्ट देखो तुम्हें सहारा डेजर्ट पूरा दिस इज एठी भी डेजर्ट अफ्रीका तुम देखुछ दिस इज किए दिस इज योर नामीब डेजर्ट नामीब एंड कालाहारी है कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका केते बड़ देख पूरा अफ्रीका सब मैसिव इंसोलेशन रिसीव करछि मन रख जेति की कंटिनेंट दर पचला अफ्रीका हला सबुठ बेसी तमरो रिसीव करछि हला इंसोलेशन एपटे हला तमरो सोमालिया डेजर्ट इथियोपिया हला ओगाडेन डेजर्ट कहंती हला दिस इज योर ओगाडेन डेजर्ट खाली एति की जाना हला दिस इज ओगाडेन तो इंसोलेशन जदि देखिबा हमर इंडिया रे के थर्ड डेजर्ट सबुठ बेसी रिसीव करछि एपटे साउथ एरिया पे भी इंसोलेशन हाय हला तो वर्तमान जानिबा कोन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंसोलेशन को फैक्टर गुडा इंसोलेशन को बेसी करे हॉर्न ऑफ अफ्रीका यस वेरी गुड आंटी हला हॉर्न ऑफ अफ्रीका का को कहा जाए जदि हम कहबी हॉर्न ऑफ अफ्रीका योर सोमालिया को कहा जाए वेरी गुड इट इज योर
है हॉर्न ऑफ अफ्रीका हॉर्न है ऑफ अफ्रीका केमती हॉर्न अफ्रीका कहीं कह जाए तुम देखुच जमी गोरुर सिंह थाए सिंह भाया जो गोरुर सिंह थाए से हॉर्न कह जाए ठीक अच्छे डिजिबुति यस यस सुश्री डिजिबुति मेनली सोमालिया को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कह जाए गोरुर जो सिंहटा कह जाए है ठीक अच्छे बेसिकली कहार सिंहटा बेसी थाए गोटे सिंह कार थाए किए मत कहीपर सुश्री आमिया कहीपर गोटे सिंह कहार थाए गाईर दीटा सिंह है षंडर दीटा सिंह समस्त घोड़ार दीटा सिंह कौ जंतु ना कह जीके क्वेश्चन कर किए कहार गोटे सिंह थाए किए कहीपर फास्ट आंसर कहार गोटे सिंह थाए राइनो घोड़ार घोड़ा वेरी गुड सुश्री राइनो गोंडा लिप्सा लिखला गोंडा इट इज राइनो है बेसिकली इट इज राइनो काजीरंगा राइनो जानी थी काजीरंगा राइनो कोठी यूनिकॉर्न यस राइनो है राइनोसोर और राइनो यस रश्मिरेखा इट इज काजीरंगा आमर कोठी काजीरंगा इज योर आसाम काजीरंगा आम करवा कोठी इट इज आसाम ओके काजीरंगा नेक्स्ट देखिए कौन यस आसाम वेरी गुड भिलेन भिलेन भिलियन की भिलेन ना वेरी गुड बहुत बढ़िया बढ़िया ना यूट्यूब रे बहुत भल लगे बहुत बढ़िया बढ़िया ना सब आस इट्स ओके लिप्सा इट्स ओके नो प्रॉब्लम ओके ठीक अच्छे अच्छा आगु देखिए पुणी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंसुलेशन को किए फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करछि है द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज नॉट इन द सेम एवरीवेयर है पृथ्वी रे जेतिक हमर इंसुलेशन पडुछि सब जगह समान सूर्य किरण पडुनी इक्वेटर ट्रॉपिक्स टा बेसी रिसीव करछि polar area subtropics कम रिसीव करछि we can say that one so it varies according to the place and time है according to the place and time it varies ठीक अछि so tropical regions get the most insolation it gradually decreases towards the pole ठीक अछि tropical region जब मैं कहबी it receives maximum insolation where it gradually decreases towards the poles pole आड़ को धीरे धीरे एटा कोन हुए yes very good रोजाली है इक्वेटर रे हमर बेसी पाए जदि मैं कहबी है इक्वेटर एरिया है सूर्य पर जो किरण पड़छ पर्टिकुलर कोठी इक्वेटर एटा ट्रॉपिक्स आगु कहितली 0 रु 30 डिग्री आउ 30 डिग्री दिस इज हला हमर ट्रॉपिक्स है इक्वेटर रु बेसी पड़े इक्वेटर ला 10 एटी दिस इज हला इक्वेटर है 10 एटी आउ एटा सूर्य जो डायरेक्ट किरणटा कोठी पड़े सूर्य डायरेक्ट किरणटा सब एटी पड़े ट्रॉपिक्स है डायरेक्ट इक्वेटर रे बेसी पड़े है तापर कौन हम ऑब्लिक रेज जो सूर्य तिरछा किरण हम ऑब्लिक रेज मुझे कहे आगु ऑब्लिक रेज है तिरछा किरण को ऑब्लिक रेज कहते कौटी पड़े पहला पोल एरिया डाके दिस इज योर पोलर एरिया और सब पोलर एरिया ठीक अच्छे पोलर रीजन बेसिकली मुझे कहबी पोलर रीजन ठीक अच्छे पोल एंड सब पोलर एरिया है एटा तुम डायरेक्ट रेज डीआर माने ठीक अच्छे सब जगह सेम नुह इक्वेटर ऊपर बेसी पड़े इक्वेटर आउ ट्रॉपिक्स रे बेसिकली इक्वेटर ऊपर सबुठ बेसी तापरे है ट्रॉपिक्स तापर सब पोलर धीरे धीरे कमी आड़ो कौट आड़ को कहीं अर्थ रो शेप टा हमर कोन कमला लेंबू भलिया अर्थ शेप इज लाइक जस्ट एन योर ऑब्लेट स्फेरॉइड और जियोइड कहते कमला लेंबू भलिया चेप्टा है इंसुलेशंस happens more in summer जब देखिबो एंड लेस इन विंटर जब हम देखिबा हमर सूर्य किरण कहीं गरम दिन तुम जानछ कहीं के हमको लागे बिकॉज मैक्सिमम इंसुलेशन आम सूर्य को पाऊ समर सीजन है विंटर रे कम पृथ्वीटा बुलूची है द मेजर फैक्टर्स इन व्हिच इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्स आर किए सोलार कंस्टेंट गोटे कह जाए मुझे कहबी गोटे करी दिस बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर एटा सोलार कंस्टेंट देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सनरेज रो है ठीक अच्छे एंड योर ड्यूरेशन ऑफ द डे अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन देन ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर है एगुड़ा है मेजर जो मैंने करती ये आज भाई क्वेश्चंस भी बहुत करियो क्वेश्चंस भी बहुत अच्छी क्वेश्चंस भी तुमको देखिले बहुत यू विल बी मोर इंटरेस्टेड बाय सीइंग द क्वेश्चंस केमते रहउची है
तो बर्तमान जानिए सोलार कांस्टेंट कौन पर्टिकुलरली सोलार कांस्टेंट ओके सोलार कांस्टेंट माने at the top of the earth's atmosphere received insolation is expressed as the solar constant. It receives at the top of the atmosphere surface on a perpendicular plane of the solar beam. Solar constant जोटा कहा जाए है this is for your only to enrich the knowledge. देखो maximum जब तुम कहबी हमर तो जो YouTube क्लास रे हमें particularly है सरफेस स्किल्स केमती डेवलप करिवो सरफेस नॉलेज केमती तमे बढ़ेइबो है जोटा की हबो एक्चुअली जदि तमे देखिबो डिटेल रे वी आर गोइंग टू सिलेबस जोटा कि हमर यूनिट इंटीग्रेटिव बैच अप्रोच बैच ऑलरेडी स्टार्ट हे छी दे आर पीडब्ल्यू रे वी आर कमिटेड टू गो फॉर विथ द सिलेबस अनुसार ही हमें कंप्लीट करू सब जिंस है बिकॉज सिविल सर्विस जोटा कि देखिबो पर्टिकुलरली वर्तमान हमर सिलेबस चेंज हे छी सिलेबस अनुसार ही हमें करू जदि तुमको देखिबो पर्टिकुलरली है जब तुम कहबी है ए बैच गुड़ा हमें मैक्सिमम विल गो थ्रू द सिलेबस जब तुम कहबी है जोटा कि अक्रॉस बैच विल गो थ्रू द सिलेबस है सिलेबस तक हमें पूरा कवर करूँ इनफैक्ट अदर बैचेस गुड़ा भी समस्त सिलेबस अनुसार और एग्जाम ओरिएंटेड रे मेनली वी आर कवरिंग दिस वन है सक्षम ऊपर जब तुम कहबी सक्षम बैच टा तुमर 1.5 वर्ष पई 2024 रु नेकी जोटा कि अगस्त आरंभ होई कि 2025 डिसेंबर 1.5 वर्ष तमे पाइबो एथरे ओनली 3999 जोटा कि बहुत बढ़िया जिंस इवन इफ क्लियर 360 आल्सो इंक्लूडेड देयर ओके जोथरे कि 1-to-1 गाइडेंस प्लस राइटिंग स्किल्स हैला प्लस पेपर इवैल्यूएशन प्लस योर मेंटरशिप छडा भी तमे आउ कोन पाइबो इंटरव्यू गाइडेंस भी पाइबो दिस इज ऑल अबाउट जोटा कि हम कहबा और भी कहबी वर्तमान देखिबा हमें कोनटा ठीक अछि इंसुलेशन तो हमें जान ले सोलर कांस्टेंट ऊपर नेक्स्ट the average insolation जब तुम कहबे received in the thermopause is 1368 watt per meter square है 1368 watt per meter square हमें देखो okay and energy and in the form of short waves thus it is termed as the solar constant for that mean distance from the sun जोटा कि कहा जाए solar constant और है दूसरी रोजल को सर ओडिशा ज्योग्राफी पढ़ा बिल्कुल ओडिशा पर कहबो बट ओडिशा ज्योग्राफी आमे पर्टिकुलरली एथरे तमरो मु तुमको आज भी कहूची YouTube क्लास रे आमे जोटा करोचु इट इज ओनली फॉर योर स्किल एनरिचमेंट वाइड नॉलेज कोड केमति रहइबो बट डिटेल सिलेबस स्टडी जोटा कि यू विल गेट इट इन योर आवर क्लासेस पर्टिकुलरली जोटा कि बैच वाइज हमर पढ़ा होची सेतरे आमे वी आर मेंटेनिंग एंड रिलीजियसली वी आर फॉलोइंग द सिलेबस जोटा कि एग्जाम ओरिएंटेड जोटा तमरो पढुची सेतरे केमति केमति रहउची केमति अप्रोच रहइबो डेली क्वेश्चंस पेपर एनालिसिस इंक्लूडिंग योर अदर सब्जेक्ट्स आल्सो सब सब्जेक्ट रे सेम जिंस हमें करछु पर्टिकुलरली एंड सिंस हला आउ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट डिटेल रे जिंस गुडा विल गेट इट ठीक अछि ओके सो वर्तमान देखिबा एंगल ऑफ इंसिडेंस कोन पुनी एंगल ऑफ सोलर कांस्टेंट तो गला पुनी एंगल ऑफ इंसिडेंस जानि इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो सिंस द अर्थ इज हैविंग जियोइड रिजेंबलिंग जियोइड माने कमला लेंबोर कोडा कोन कोनती ऑब्लेट स्फेरॉइड हला ऑब्लेट स्फेरॉइड कोनती आपरो शेप टाको जियोइड और ऑब्लेट्स माने कमला लेंबू बळिया चटका ऊपरटा फ्लैट एपटा ब्लॉज जेंते लेंबू हला दिस इज एन ऑरेंज शेप कोनती ऑरेंज शेप आथरा शेप टा कोन ऑरेंज टा शेप चटका कमला लेंबू बळिया स्वर्ण पिया सर इंडियन ज्योग्राफी टॉपिक्स विद कांसेप्ट ऑफ एमसीक्यू पीआईक्यू एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल 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 स्वर्ण हला इंडियन ज्योग्राफी जोटा कि हमर बैच जोटा कि आरंभ होछु बिल्कुल हला इंडियन ज्योग्राफी पढेला बेले डेफिनेट विल फॉलो दैट वन आउ टॉपिक्स कांसेप्ट ऑफ एमसीक्यू बिल्कुल वाईटी रे तमे कहउछ स्वर्ण तमे वाईटी रे पचारछो ना डिटेल क्लास रे कथा पचारछो कोथरे स्वर्ण स्वर्ण पचार जोटा जोटा कंफ्यूजन होछि पचार हला एमसीक्यू तो वाईटी रे बिल्कुल हुए वाईटी रे बिल्कुल हमें करछु हला आज भी करबा जस्ट वेट वाईटी बिल्कुल बिल्कुल स्वर्ण हला इंडियन ज्योग्राफी बिल्कुल हबो डोंट वरी फॉर दैट वन इंडियन ज्योग्राफी बिल्कुल करा हबो हला हला अच्छा नेक्स्ट देखिबा पुणी एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम जानला कोन पर्टिकुलरली सन स्ट्राइक सरफेस एट द डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट प्लेसेस हला दिस इज द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस सो एंगल इंसिडेंस केमती केमती सूर्यंकर किरण पडुची पर्टिकुलरली हला सूर्यंकर किरण केमती मान लो कि एटा θ1 हला आ गुटा हला θ2 हला एटा मेन जोटा कि θ1 मु कहले एटा धर 30 डिग्री हला एटा तमर हो केते धर 60 डिग्री हला एंगल ऑफ सूर्य को केमती पडुची सेटा हला मेजर जिंस ठीक अछि देखो इंडियन ज्योग्राफी पढ़िया पूर्व स्वर्ण बिल्कुल करबे स्वर्ण इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा पूर्व टिके प्रिलिमिनरी जोटा कि आईडिया रहबा दरकार
तमरो जियोमॉर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी अदरवाइज टिके माने जो माने रेगुलर लर्नर्स अछंती पाइटेरी टिके तांको हला माने अंडरस्टैंडिंग रे इजी रहइबो हला दैट इज व्हाट द मेन पर्पस ओके सो ना नेक्स्ट देखिबा हायर द लैटिट्यूड लेस इज द एंगल दे मेक विथ द सरफेस जते हला जते तम रहइबो हायर लैटिट्यूड लेस इज द एंगल ओके देखिए द एरिया कवर्ड बाय द वर्टिकल रेज ऑलवेज लेस देन द स्लैंट रेज जति रहइबो एरिया कवर्ड रहइबो दैट इज आल्सो लेस माने तमे कहइबो एंगल टा जते वर्टिकल रहइबो सेते कम रहइबो माने जते सूर्यंकर जते माने जते डिग्री पडिबो डिग्री जते कम रहइबो बुझो एटा फंडामेंटली जोटा केबे ए जो जिंसोटा तुमको हमें वाईटी रे कहूचू पर्टिकुलर जोटा कि तमरो एग्जाम रे गोटे क्लियर कीन गोटे शार्प गोटे इंटेलिजेंस बढ़िबो केमती एटी कोन तुम जानलो वर्टिकल रेज रे कम कवर होबो हला सूर्यंकर जो कहइबो वर्टिकल रेज रे कम कवर होबो हला वर्टिकल रेज माने धर एमती पड़ला ताले कोन कम होबो माने इथरे जदी तमरो गोटे जिंस तमे जे रेज ता गोटे एमती पडुची हला आ गोटे हला तमरो एती पडुची मते कहलो को एंगल ता कवर होबो एइथरे तमरो मैक्सिमम एरिया कवर होबो मैक्सिमम एरिया कवर्ड हला सन रेज जदी पडुची मैक्सिमम एरिया हला कवर्ड तुम कहबी मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय सन रेज हला सन रेज ठीक अछि नेक्स्ट देखबा कोन हला if more area is covered the wind energy get distributed and net energy is received per unit area decreases हला तो जते जदो सेम जिंसटा जोटा कि डिक्रीज करियो ओके moreover the sun rays with small angle travels more than the atmosphere in the ray striking in the angle so this is all about simple जोटा कि तुम कहली हला जते डिग्री तमर कम होबो सेते तमर सरफेस एरिया बढ़िबो एति मन रखता ठीक अछि ड्यूरेशन ऑफ द डे जेमति गोटे दिन की कोटा बेसी हबो ड्यूरेशन लेंथ ऑफ द डे आल्सो डिटरमाइंस द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट हला ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट भी बढ़ाए रोजलिन केला बट सर मैक्सिमम इंसोलेशन रे मैक्सिमम इंसुलेशन मिलिबो कथा मैक्सिमम इंसुलेशन माने मैक्सिमम इंक्लिनेशन रे मैक्सिमम हां बिल्कुल मैक्सिमम इंक्लिनेशन माने देखो मैक्सिमम कोटा कहूचो मिनिमम पर्टिकुलरली इंक्लिनेशन माने सूर्यंकर जोटी पर्टिकुलरली किरण पडुची हला मेन डिग्री हम जति डिग्रीटा देखिबो एटा धर तमरो 70 डिग्री हला हला निजे भाबो आ एटा हला 30 डिग्री तो 30 डिग्री रे तमे कोन मिनिमम इंसुलेशन रे मैक्सिमम एरिया कवर रोजालिन गोटे बढ़िया क्वेश्चन पचला कोन एटी मु कहबी कोन मिनिमम इंक्लिनेशन हला मिनिमम इंक्लिनेशन हला रिसीव्स मैक्सिमम हला मैक्सिमम एरिया covered by your sun rays एति मन दिस इज द फंडामेंटल ठीक अछि अर्थ रे एमित रे भी इंक्लाइंड ही के अछि हला पुनी तापर भी जति तिरछा किरण पड़ला आउरी बेसी पाइ ठीक अछि ओके ठीक अछि बुझियला रोजालिन नेक्स्ट हम देखिबा कोन ड्यूरेशन माने लेंथ ऑफ द डे हला व्हिच अफेक्ट्स द solar radiation received by the earth surface the more the hours of sunshine the greater the quantity of solar radiations will be received ता माने जदि म कहबी इक्वेटर एरिया रे जेहेतु 12 घंटा दिन होचे से जुगु हला बेसी तमर इंसुलेशन होची सो माने एटी कोन कहबी इक्वेटर एरिया ठीक अछि इक्वेटर receives maximum कोन कहबी receives your maximum sunlight because of this reason बुझियला काई कि दिन 12 घंटा डे 12 आवर आउ नाइट भी 12 आवर्स रहे दूसरी कोन लिखला सर एरिया मैक्सिमम बट सर हीट अधिका मैक्सिमम इंक्लिनेशन रे क्या हो बिल्कुल एरिया जदी तमरो मैक्सिमम कवर हैला ता माने कोन हीट अधिका रिसीव हैला बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट हैला एब्सोल्युटली करेक्ट जते एरिया अधिका बढ़ियो सेते एरिया तमरो हीट ता रिसीव बेसी होबो अधिका ठीक अछि मैक्सिमम होबो अच्छा वर्तमान पुणी देखिबा कोन हैला तापर पुणी देखिबा कोन निश्चय इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन्स द सनी टाइम वेरीज बिटवीन 0 and 24 hours on the autumn and the spring and equinoxes हैला सेम द आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन ने कोन हो तमरो एटा वेरी करे कम बेसी हुए ओके वेलकम रोजालिन ओके वेरी गुड
सेमती देखिए कौन द नाइट एंड द डे all over the earth equal under these days. The maximum amount of insolation is received at the equator, those and the amount of insolation at the poles हला decreases toward the pole. काहे कि अर्थ रो ए नेचर जो कोन अछि सूर्यंकर किरण जोटा हम पढिले सूर्यंकर हला सो मैक्सिमम इंसोलेशन कोठी हुए पर्टिकुलरली तमर रिसीव्ड एट द इक्वेटर एटी ट्रॉपिक्स रे बेसिकली रिसीव्ड होची दिस इज हला ट्रॉपिक्स एंड इक्वेटर ए एरिया रे बेसी होची रिसीव आउ कमी जाउची कोड को तमर पोल आडी को एटी कम होची लेस इंसोलेशन हला लेस एटी मोर ठीक अछि दिस इज द थिंग जोटा हम जानले सेमती अर्थ रो डिस्टेंस फ्रॉम द सन अर्थ रो केते की मते कहि परिवो एटी व्हाट इज द डिस्टेंस मते कहबी व्हाट इज द डिस्टेंस व्हाट इज के मते कहला ओडी जीके क्वेश्चन पचाछि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन केते के मते कहि परिवो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन मिस्टर एक्स वेलकम बढ़िया नाम मिस्टर एक्स डिस्टेंस केते किए मते कहि परिबो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन किए कहि परिबो व्हाट इज द डिस्टेंस लेट मी नो मिस्टर एक्स आई एम मिस्टर वाई मु वेली वाई मिस्टर एक्स को व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन स्वर्ण स्वर्ण कहला 93 मिलियन आउ टिके पर हम क्वेश्चन आंसर सेशन करबा हैला 93 स्वर्ण रो आंसर देला स्वर्ण गेव द आंसर डिस्टेंस केते 93 मिलियन ओके स्वर्ण व्हाट डिड यू गेट दिस फिगर रोजालिन इट इज अच्छा रोशन कहला 150 मिलियन वेरी गुड 150 मिलियन किलोमीटर ओके हैला 150 मिलियन किलोमीटर या भीतर आउ किए मिस्टर एक्स आउ किए के अच्छा को आंसर को दिस वेरी इंटरेस्टिंग जस्ट टू पार्ट केमते रही क्लास रे टाइप रो हमरो हैला रेगुलर प्रैक्टिस चले क्वेश्चन रोशन कहला 150 आउ के आंसर दियो लिप्सा 1 2 3 हैला यस वन रिसर कहला 149.8 और लेट्स से 15 मिलियन किलोमीटर वेरी गुड आंसर जदि मु कहबी करेक्ट आंसर जदि मु कहबी हैला इट इज 15 crore किलोमीटर 15 crore किलोमीटर आंसर हैला 15 crore किलोमीटर केम देखा पचारंती और इट इज 150 मिलियन किलोमीटर रोशन वाज करेक्ट जो माने देइछो हैला एटा 150 मिलियन किलोमीटर इज करेक्ट ठीक अछि 150 हैला लिप्सा रो आउ यार भी ठीक अछि लिप्सा और रोशन इज करेक्ट दिस इज रॉन्ग हैला एटा रॉन्ग दिस वन ठीक अछि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रोशन ओके लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लाइट ईयर को आ जाए ठीक अछि यस वी कैन से दैट वन वेरी गुड बहुत बढ़िया आंसर देलो समस्त वेरी नाइस ओके पुणी हमें देखिबा आगु को कौन द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज अबाउट केते 149 मीटर दिस इज नथिंग बट योर केते 150 मिलियन किलोमीटर हला 150 मिलियन किलोमीटर हला and where the earth is farthest 152 from the sun is known as aphelion so this is hela perihelion out hela aphelion perihelion माने पाखरे आ aphelion वाला ताटू दूर रे farthest so perihelion केते 147 रहे ठीक अछि aphelion रे केते 152 but common जदि हमें देखिबा earth distance that is your 150 million kilometer मन रख these are the very basic things जोटा कि हमें जानिबा दरकार सूर्य और पृथ्वी भितर दूरता केते हैला पेरिहेलियन माने पी फॉर पास पेरिहेलियन अपेलियन माने दूर ओके सो जदि हमें देखिबा on 3rd January each year which is the closest distance during the aphelion the northern hemisphere is facing the sun therefore the receives energy about 7% less and perihelion मन रखो कोन हैला इतरे ड्यूरिंग aphelion से समय कोन था northern hemisphere is facing the sun हैला aphelion and therefore receives energy about 7% less than the perihelion ठीक अछि aphelion टे जस्ट उल्टा perihelion माने सूर्य से समय कोन है बेसी northern hemisphere रिसीव करे हैला आ जस्ट तारा उल्टा हैला aphelion this is all next देखिबा transparency of atmosphere कोन
atmosphere is not transparent. मन रखो हमर जो atmosphere टा transparent नुह. All the radiations coming from the sun because of the different composition and layers. Different composition और layers रे atmosphere हमरो रहेनी. ठीक अछि. It is also one of the controlling factors of insolation to reach the earth's surface. ठीक अछि. One of the factors that controlling the reach the earth's surface. Transparency कौन हो? The atmosphere is composed of gases, water vapor and particulate matters. कौन कौन? Gases, water vapor and particulate matters. हैला? ठीक अछि? हमार atmosphere. The atmosphere is mixture of gases किए nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, neon, helium, methane, krypton, ozone. हमारे इटा सब आउ your nitrous oxide, hydrogen and xenon. हम atmosphere सब कौन अछि? These are the mixture of gases. एतिकी गैस मिसिंग सब हमरो atmosphere अछि. जोटा कि हम लास्ट क्लास में पढ़िथिले. रोशन कौन लिखला? Is perihelion and aphelion day always fixed? Yes, it is an particularly कौन हुए? पूरा गोटे डे टारे पूरा सब दिन रहनी. It is day रे गोटे particular time रे ताकु धरा जाए कि एटा पूरा पाखरे आउ aphelion रे दूर रे. डे रे गोटे पर्टिकुलर आवर रे टाइम रे किंतु गोटे डे रे ही सेटा फॉल करे जोटा कि हैला जोटा कि कहा जाए एवरी 3rd जनवरी हैला पेरिहेलियन. ठीक अछि. आउ जुलाई रे हैला एवरी पर्टिकुलरली 3rd जुलाई पर्टिकुलर 6 मास भीतर तमर आसे 4 जुलाई के तमर धरा हुए. हैला 3rd जनवरी हैला तमर पेरिहेलियन. एपेलियन रे फारदेस्ट ला तमर 4th जुलाई तमर रहे. हैला सो माने जनवरी जुलाई रे तमर पड़े मेनली मंथ जति हिसाब रे न. Atmosphere also contains water vapor, water in the gaseous state and longer in the duration daylight. Hello, this is transparency. How it is पढ़िबा? That is your inversion. एटा बुझी हला. ठीक अछि. क्लास तो तमे सबु चैप्टर रे जहा जा जेंति हमर वर्तमान जियोमॉर्फोलॉजी सलानी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, वर्ल्ड क्लाइमेट भी सलानी, वर्तमान वर्ल्ड रीजनल चार्ज सबु जगह रे तमे देखिबो क्वेश्चन आंसर इज कंपलसरी. मन रखो मु सबु बेले समस्त को स्टूडेंट को गोटे जगह रे कुए हला आउट ऑफ माय जति कि मु एक्सपीरियंस माने आई एम मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स खाली गोटे जिंस मु कहे समस्त को कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस रे किछ होबनी. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. खाली पढ़िले हबनी. पढ़िया संगे तुमको क्वेश्चंस भी करिया को पड़ी. आज बेठी हमें क्वेश्चन करिवा. तो रेगुलर खाली सुनो पढ़िबाटा बड़ इंपोर्टेंट नो. केमिति पढ़िबा दैट इज मोर इंपोर्टेंट. केमिति पढ़िबा हाउ वी आर कंडक्टिंग द एग्जाम हॉल रे सब बड़ जिंस हम टारगेट हाउ टू रिजॉल्व द क्वेश्चंस इन एग्जाम. दैट इज द मेन योर आइडिया जोटा रहिबा दरकार. हला बहुत जगह कहीं हम ए जो यूट्यूब सेशंस थ्रू रे हला दिस इज द मीडियम वेयर वी कैन टच टू द मासेस दैट टेल द ट्रुथ. कोटा हमरो हे परिबो माने एक्चुअल तमरो स्ट्रेटजी टा बहुत जिंस जानिबा दरकार. कारण क्लास 1 प्रोफाइल बड़ बड़ एग्जाम लेवल रो. सो दिस इज वेरी मच नीडेड टू नो. ओके ठीक अछि. नेक्स्ट देखिबा कोन. तो इन्वर्सन टेम्परेचर गोटे टाइम रे कोन भी इन्वर्सन टेम्परेचर. इन्वर्सन टेम्परेचर कोन तमे आगु जानिथिलो कि हमें कोन पढथले नॉर्मल लैप्स रेट. हला एटा बहुत इंटरेस्टिंग. हला इन्वर्सन टेम्परेचर कोन होबो? ऑपोजिट ऑफ मु कहबी ऑपोजिट ऑफ योर ऑपोजिट ऑफ एनएलआर नॉर्मल लैप्स रेट. नॉर्मल लैप्स रेट रो ठीक ऑपोजिट ता हला तमरो inversion temperature, that is NLR. हला normal lapse rate. हला normal lapse rate रो कहा जाए कौन? Opposite of inversion. Normal lapse rate कौन? The higher we go, the cooler we feel. Normal lapse rate कौन हुए? 1 degree centigrade temperature drop करथला केते मीटर रे? किए मते कहि परिबो? What is this one? केते मीटर रे normal lapse rate किए मते कहि परिबो? रोशन, सुश्री, अग्निवीर. अग्निवीर not for UPSC, only Indian Army lifeline. Sir अच्छा रश्मि sir, where are you teaching? Where are you teaching at IIS? I was Rashmi. बाणिक्रे भी थिली कलिंगर भी मु पढ़ौतरा. I was there. ओके ठीक अछि. दिल्ली रे पढ़ाए प्रोडिजी आईएएस रे. यस ओके यस रश्मि
बर्तमान देखो कि मु पचारि क्वेश्चन कि द हायर वी गो द कूलर वी फील केते 1 डिग्री जो टेम्परेचर ड्रॉप करे केते मीटर रे रोशन कहला 166 मीटर यस रोजन कहला सर इन वैली ओके केते हबो पर्टिकुलरली इट इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 165 मीटर प्रति 165 मीटर रे तमर कौन हुए टेम्परेचर गोटे डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ड्रॉप करे है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ड्रॉप करे है माने तमे जदि 165 मीटर ऊपर को जीव तमे कौन पाइबो गोटे डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ड्रॉप हम ड्रॉप इन कौन लिखली ड्रॉप इन 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर्टिकुलरली है ठीक अच्छे यहाँ है तुम यार उल्टाटा कौन हुए बेले बेले हिल स्टेशन मानकर देखा जाए जमी मुझे कहली कुल्लू मनाली है नैनीताल उटी कोडाई केनाल किए जाइछ केबे किए जाइछ रश्मि रश्मि जाइछ केबे रश्मि रेखा जाइछ केबे एठिकी कुल्लू एनी हिल स्टेशन तुम देखियो तुमको सेठी बहुत ठंडा लगे माने आई मीन कूलर इन्वर्सन टेम्परेचर टा सेठी हुए वैली एरियाज रे इन्वर्सन टेम्परेचर कोठी हुए वैलीज एरियाज कौन हुए एठी हला there are some place conditions where in the lower troposphere reversal of the normal lapse rate ro just reversal of ठीक उल्टा टा माने यार ठीक उल्टा टा माने सेठी कोन हबो आमे जनरली पढतो द हायर वी गो द कूलर वी फील इट इज जस्ट उल्टा टा हला उषुम लागिवो जनरली कोन with altitude temperature increases अग्निवीर अग्निवीर नारे बढ़िया नो ओनली जम्मू कश्मीर वेरी नाइस ओके अच्छा अच्छा यू वेंट टू जम्मू कश्मीर दैट्स वेरी नाइस जम्मू कश्मीर रो कोठी जाइछो राजा कोठी जाइछो जम्मू कश्मीर रो बहुत जगह अछि गुलमर्ग सोनमर्ग कश्मीर ओके कोडाई केनाल मनाली जाइछो रश्मि जाइछि रश्मि ने जाइछि रश्मि रेखा कोडाई केनाल मनाली आउ की कोठी जाइछि एंड प्लीज डोंट टेल मी दारिंगीबाड़ी है दारिंगीबाड़ी जी कहे बरफ पड़ी कि किसी नुह पूरा डह डह गरम मुझे जाइली है बिल्कुल मत भल लगे से जगह कि ना बिल्कुल है ओके कहीं जाइन ठीक अच्छे ओके है जीव जो बिल्कुल लाइफ विल गिव अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली जीव नो प्रॉब्लम तो देखिए कौन it occurs at a particular cold winter nights मन रखो है cold winter nights कौन हुए when sky is clear air is even very dry and किसी wind भी न था that is therefore lower layer is much cooler इटी था कौन and where the upper layer is warmer example due to this hotel resorts holiday in Himalayas are built on the upper slopes इटी देखो जो यही जो कौन हुए तमरो होटल रिजोर्ट्स आउ हिमालय रे कौन हुए तमरो पर्टिकुलरली सामान्य बिल्ड करन कोठी स्लोप्स रे वैलीज गोडा करे काहेकि इट इज बिकॉज ऑफ दैट इज व्हाई योर होटल इंडस्ट्री कौन हुए ठीक अछि होटल इंडस्ट्रीज हला होटल इंडस्ट्रीज प्रीफर हला वैली एरियाज बिकॉज ऑफ कौन पे इन्वर्सन बिकॉज ऑफ दिस रीजन inversion valley areas kahinki because of inversion of temperature because of inversion of temperature because of inversion temperature है ना inversion temperature or temperature inversion because of temperature ठीक है because of temperature inversion मन रख this is the reason okay this is very interesting रोशन गुलमर्ग पहलगांव दूधपाड़ ओके ठीक अच्छे रोशन बहुत जगह बुल देछि हला गुलमर्ग एरिया बुलछि वेरी नाइस हला मु भी जाई जाय वेंट टू कश्मीर इवन इफ अनंतनाग जिबार इच्छा थिला बट जाई पालुनु बिकॉज सम सेतल किछि हेइतिला हमकु इंडियन आर्मी परमिट कलानी ऊपर जिवा पय ओके वर्तमान देखिबा हला सरला एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम देखुछो कोन एटी तुम कोन देखुछो इज वेरी आल्सो इंटरेस्टिंग हला नॉर्मल एटमॉस्फेयर आ परे मु तुमको क्वेश्चन गुडा करेबी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन तुम देखुच किए मत कह एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम देखुच कौन देख लो आवर एटमॉस्फेयर प्रथम व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहले कौन हम राजा कहला नहीं मु जाइनी हो ठीक अच्छे जीव अपॉर्चुनिटी मिलिबो निश्चय
ना करते नुह रे ये राजा से समय किसी गोटे प्रोब्लेम होता जोटा कि आमको से रखिले एंड सिंस वी आर गोइंग फॉर ए फ्यू डेज माने जाइलु हमर प्रोग्राम स्लॉट से जो आम कैंसल कलु है पर्टिकुलरली से रखिले किसी घंटा विल बैक टू दैट वन है प्रेशर रोजालिन कहला कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर मास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओके एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन हम आवर एटमॉस्फेयर रेस्ट ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ हमर जो एटमॉस्फेयर टा अछि एटा कौन हुए एटमॉस्फेयर टा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ है हेंस इट एक्सर्ट्स इट वेट एज प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस ठीक अछि एटा देखुछो ग्रेविटेशनल पुल and my atmosphere कौन हुए it pressures on the earth atmosphere it तुम देखिलो gravitational pull of the earth exerts a weight on the pressure of the earth surface this is हैला weight कोच gravitational pull चला एडी कौन करछि gravitational pull टाणुछि का को atmosphere को टाणुछि ऊपर एटा it exerts सबले मन रखो atmospheric pressure टा pointed रहे pointed ठीक अछि it is always pointed atmospheric pressure. So therefore atmospheric pressure is the weight of the air column at any given place and time है से जो कौन हुए atmospheric air pressure always given at the air column and time. It is measured as force per unit area with the help of an instrument called barometer. barometer गोटे instrument जो थरे कि तमरो मपा हुए कौन barometer रे atmospheric pressure ठीक अछि barometer है barometer is an instrument जो थरे कि तमरो मपा हुए atmospheric pressure ठीक अछि atmospheric pressure इतरे मपा हुए ठीक अछि barometer रे तमरो मपा हुए atmospheric pressure मन रखो एटा क्वेश्चन गोटे कोथरे मपा हुए it is your barometer basically है meteorologists use this unit as millibars used हुए 1 millibar is equal to force is equal to 1 gram per square centimeter basically 1 gram per square centimeter है normal pressure at sea level केते हमरो basically जोटा कि रहे 76 Hg माने mercury और 1.01325 millibar क्लास रे जदि तमे देखिबो एगुडा सब हमें वी आर कवरिंग इन द डिटेल हैला जोतरे कि हमें इतरे तम केवल स्किल्स नॉलेज आइडिया जोटा कि एनसीईआरटी केमति पढिबो कोन syllabus wise we are covering in detail in the class जोटा कि ऑलरेडी आरंभ हो जाई yes रोशन yes barometer हमें मेनली कहूता हैला this is तमे देखुचो this is your atmospheric pressure हमर अर्थ ऊपर जेमति पडुची this is atmospheric pressure टा अर्थ ऊपर पडुची this is the way that how atmospheric pressure is exerted on the earth ठीक अछि sir atmospheric pressure is same on land mass and oceans land mass और oceans रे different रहिबो because they behave काहे कि solid and liquid अर्थ ऊपर तो पडुची ठीक अछि solid and liquid they both have different nature solid and liquid solid differently behave करे and liquid भी differently behave करे ठीक अछि okay ठीक अछि वर्तमान आसीबा कोरियोलिस इफेक्ट बहुत वेरी इंटरेस्टिंग हमर बहुत बेसिक जिंस ओडा इतरा में जानिबा बहुत इज द वेरी बेसिक जिंस कोरियोलिस इफेक्ट माने कोन जनरली कोन हुए देखो ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ जो बुलुची ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ हैला winds does not cross the isobars at right angles हमर जो wind है से डायरेक्ट मैं तुमको डायग्राम नेक्स्ट देखेबी डायरेक्ट तमर कोन हुए it doesn't cross the isobars at right angle ले जाएनी rather कोन हुए as pressure gradient force it get deflected from their original path हैला this deviation result of the earth rotation is called Coriolis effect ठीक अछि एट तमे देखो डायग्राम रे विंड ता तमरा डायरेक्टली जाएनी कोन हुए डेविएट हुए हैला एट तमे देखुछो कोन डिफ्लेक्शन कोरियोलिस इफेक्ट हैला कोरियोलिस इफेक्ट जो कोन होछ तमे देखछो एटी 90 डिग्री एटी एंगल ता हैला 90 डिग्री दिस इज 90 डिग्री विंड ता एक्चुअली एमिति जाएनी विंड ता कोन करे डिफ्लेक्ट करे
ठीक अच्छे देखुच ये बेटर मुझे यहाँ कर दूसरी बेटर है दिस इज 90 डिग्री तो विंड डज नॉट डिफ्लेक्ट इन 90 माने 90 डिग्री जाएनी रादर इट डिफ्लेक्ट क्वाड को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जदि मैं कहबी है इन कहबी इन northern hemisphere winds wind deflects right direction एपट rightward है rightward or east direction eastward right direction or eastward in southern hemisphere just opposite southern hemisphere कौन left or westward दिस इज एटी देख तुम ये देखुच नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आउ सदर्न हेमिस्फीयर कौन देखुच विंडटा यही पट को जाऊँ कौन लेफ्ट और वेस्टवर्ड ठीक है लेफ्ट और वेस्टवर्ड बेसिकली लेफ्ट को जाऊँ और वेस्टवर्ड को जाऊँ कौटी सदर्न हेमिस्फीयर दिस इज देखुच दिस इज डिफ्लेक्शन टू द राइट है इट टर्न्स टू द राइट है एटा हला तमरो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर माने जदी एटी करबी एटी हला दिस इज योर इक्वेटर हला दिस इज योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हला आ एटा हला साउदर्न हेमिस्फीयर एटा तमे मन रखो इज द वेरी बेसिक्स फंडामेंटल हला आ परे हम क्वेश्चन करबा कोन क्वेश्चन बचला रोशन सर व्हाई कोरियलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट पोल एट मिनिमम एट इक्वेटर बढ़िया क्वेश्चन गोटे रोशन पचारला कि व्हाई कोरियलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट इक्वेटर and minimum maximum at pole and minimum at equator आर रीजन है रोशन क्वेश्चन नो आंसर मु दोची ड्यू टू अर्थ साइज है ड्यू टू अर्थ साइज कौन कौन है एट पोल एरिया is flatter and relatively कौन होची and relatively sorry and flatter and relatively smaller diameter smaller in diameter causes or causes not better resulted maximum Coriolis force this is where at equator है bulge shape है जदि कहबी इक्वेटर कौन bulging shape और कौन करबा और maximum diameter है resulted lesser Coriolis force than pole is it okay हमें जान ले रोशन एबे बुझियला हला बेसी ठीक अछि से जो एटा कोन हुए हला कि मैक्सिमम डायमीटर इक्वेटर हमर कोन इक्वेटर हमर जे देखिबो इक्वेटर टा हमर पर्टिकुलरली जदि कहबी हला पोल एरिया माने एठी देखिबो पेटुआ इक्वेटर टा जगह कोन इट मैक्सिमम सरफेस एरिया दिस इज इक्वेटर मैक्सिमम सरफेस एरिया इट हैला स्मॉल एरिया दिस इज स्मॉल पोल हैला स्मॉल एरिया ठीक अछि बुझियला रे इज इट ओके रोशन ठीक अछि ओके
ओके आपरे खाली हम करी तापर हमें क्वेश्चन को जीवा रोशन करला थैंक यू सर फॉर क्लैरिफिकेशन दिस हैड ए रॉन्ग इंटरप्रिटेशन आई थॉट इट इज बिकॉज ऑफ स्पीड ओके गुड वेरी गुड रोशन ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं है प्रेशर बेल्ट खाली जानी आमर वर्ल्ड रो प्रेशर बेल्ट केमती केमती पोलार हाई सब पोलार सब ट्रॉपिकल इक्वेटर लो सब ट्रॉपिकल हाई और सब पोलार लो मन रखो टोटल देर आर टोटल 7 प्रेशर बेल्ट खाली मन रखो देर आर टोटल है 7 प्रेशर बेल्ट आमर टोटल 7 प्रेशर बेल्ट आमर रोज ठीक अच्छे 7 प्रेशर बेल्ट गोटे इक्वेटर लो प्रेशर सब ट्रॉपिकल हाई दीटा रोची माने एटा 1 हला एटी 2 ठीक अच्छे देन एटी भी 3 4 हला तमरो सब पोलर लो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एटी भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे एटा हला 6 सब पोलर लो ठीक अच्छे 1 2 3 4 5 दिस वन 6 हला पोलर हाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे 7 हला एटी सेमती पोलर सब पोलर एई जगह तो 7टा प्रेशर बेल्ट एबे टी क्वेश्चन करिया समस्ते रेडी समस्ते क्वेश्चन पई विल गो फॉर द क्वेश्चन नाउ ठीक अछि आउ के किछ पचारिबो ओके वेरी गुड हला सेम थी हमर आउ खाली गोटे कहि दिए शॉर्ट रे विंड जदि कोन कहबो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ विंड इज कॉल्ड हला हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द एयर इज कॉल्ड योर विंड मन रखो हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर इज विंड विंड टा कोन गोटे हला प्लैनेटरी विंड लोकल विंड आ गोटे हला हमको पीरियोडिक विंड खाली जानी रखो प्लैनेटरी लोकल एंड पीरियोडिक विंड कोन कोन ए देखुछो तमे हला प्लैनेटरी विंड रे किड जीवो ईस्टर्ली हला नॉर्थ ईस्ट ट्रेड कहती नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहती ईस्टर्ली वेस्टर्ली भी जीव से ठीक अच्छे है यहाँ तुम प्लानेटरी आउ गए लोकल विंड माने जोड़ा आम सब कौ जगह अर्थ लोकल जमी फोहेन चिनुक एगुड़ा सब लोकल विंड्स गुड़ा सब है आउ तुम पीरियोडिक विंड्स माने मॉनसून बेसिकली जो मॉनसून वैली ब्रिज एगुड़ा है बर्तमान क्वेश्चन करवा बेटर कर क्वेश्चन देखा क्वेश्चन टा हमर रहइबो मिक्स पर्टिकुलरली सब चैप्टर नै कि मु करिवि जेंति जियोमॉर्फोलॉजी सॉर्टला क्लाइमेटोलॉजी दैट विल बी बेटर ओके नाउ सी प्रैक्टिस कौन erosion of soil by a river mainly depends upon very easy question very fundamental and easy कहला erosion of soil by a river mainly depends upon its depth its length its speed at which it follows its width कोटा ABCD erosion of soil by a river mainly depends upon depth, length, its speed at which it flows and its width. Roshan answer dela C. Okay. Anyone else? वो समस्त participate करो. What arrive? Erosion by a river. Which one? ये कही परिवो बाकी सुश्री रश्मि रेखा स्पीड है स्पीड ओके तो आंसर जदि देखियो एनीवन एल्स रोजालिन का भूल ठीक कर पार्टिसिपेट इज वेरी इंटरेस्टिंग जानिया पे रश्मि ओके वेरी गुड स्पीड और सी एनीवन एल्स आंसर जदि देखियो इट इज तुमरो सी हैला इट इज करेक्ट ए हबनी कि बी हबनी कि डी हबनी इट इज सी राइट सेमती Mohoveric discontinuity separates upper mantle and lower crust, mantle and the asthenosphere, inner solid core and outer liquid core, core and the mantle. Mohoveric कुआ इतला कहला रे कि मत कहला इटा Mohoveric discontinuity separate upper mantle and lower crust. Okay, mantle and asthenosphere, inner solid core, outer solid core.
कहल आंसर दे कौन ए 2 दौच ए ओडिशा कम्युनिटी सर्कल कोरियलिस 4 मिनिमम एट इक्वेटर ओके स्क्रीन टिक ऑफ हो गला गोटे सेकेंड इज इट ओके मो बेरिक जदि आंसर देखियो आंसर इज योर ए इट इज योर ए हला आंसर ठीक अछि क्या सिरो प्रिंट हला मोवेरिक सर्कल तमर ए अपर मेंटल हला एंड लोअर क्रस्ट नेक्स्ट देखबा पुनी थर्ड रे एटा करो वेरी गुड थर्ड क्वेश्चन टा करो मिसेल लिस्ट 1 लिस्ट 2 जापान हवाई सिसिली आइलैंड हला एटना लाकी मोनालोआ एंड फुजियामा को रहइबो हला जापान हवाई सिसिली एंड कोटा सिसिली एंड आइलैंड कोटा रहइबो इके स्क्रीन टा ऑफ हो जाइछि इट इज जापान हवाई सिसिली आइलैंड एटना लाकी मोनालोआ आउ फुजियामा आ भीतर कोन रहइबो एबीसीडी रो टिके मैं एटी रखी दूची पर्टिकुलरली हला एटी ए बी सी एंड डी हला एटी मु लिखि दूची 1 2 3 4 एटी देखि दियो देन 4 3 1 2 हला 4 3 1 2 3 2 1 4 then 3 4 1 2 हला 3 4 1 2 एठू गले हेलानी को ठीक अछि ओके all are volcanic mountain yes very good all are volcanic sir b will be right b ठीक अछि प्रथम देखिबा जापान जदि हबो जापान रो सिंपल जापान हला फुजियामा 4 हला एटी सिंपल तुम कोड पइला एकातर एटी गोटी ही तमर देछि जापान फुजियामा एटा बिल्कुल एब्सोल्युटली बी एटी देखिबो ए बी सी डी में धरे देबी ए बी आउ सी डी एटी गोटी ही तुम आंसर पाइयो जो 4 3 1 2 जापान हला फुजियामा मन रखो फुजियामा टा कोडी जापान रे हवाई हला कोडी मोनालोआ 4 3 एटा हला हवाई 3 सिसिली हला कोडी सिसिली यदि देखिबी एटना एटना ला इटली पाखरे 1 आउ लाकी हला आइलैंड सो 4 3 1 2 करेक्ट हला बी बी फॉर बॉम्बे केमति तमे पाइबो देखो एई बळे क्वेश्चन जतले तमे अटेंड करिवो गोटिए मन रखो केवल गोटिए जदि तमे जानिथिबो यू कैन वेरी वेल यू कैन गो थ्रू द हला आंसर तमे रिजॉल्व करि पर इट डजंट नेसेसरी दैट यू हैव टू नो द ऑल द थिंग्स ओनली गोटिए जदि जानिथिबो तमे एग्जाम रे तमे आराम से कर परियो मन रखो बड़ बड़ एग्जाम सिविल सर्विस सब मन रख क्लू थाए सब जिन गोटे क्लू दिखती बिना क्लू रे किसी हेनी क्लू यू हैव टू नो दैट वन है तुम जब भाव कि मुझे जल्दी जल्दी सारिदेवी दैट इज नो मीनिंग यस बी मैक्सिमम चूज कर बी इज करेक्ट यस है मोनालोटा मन रख ये सब बेले सब बेले ऑल टाइम तुम कौन हुए मैक्सिमम कहबी मैक्सिमम है मैक्सिमम योर वोल्केनिक फ्लो वोल्केनो फ्लो मैक्सिमम वोल्केनो फ्लो हुए कोटा मोनालोआ है ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए कौन पुणी ओके मोनालोआ एंड मोनाकुआ यस रोशन मोनालोआ और मोनाकियाटा जो तुम कहबो ये दुईटा एटा अछि कोठी
मोना लो मोना के दीटांग तुम अच्छी है एटा दीटांग है हवाई हवाई ठीक अच्छे हवाई आइलैंड जब मुझे कहबी हवाई है हवाई आइलैंड कोटी हवाई आइलैंड है यूएस रो इट इज 50th स्टेट ऑफ यूएसए मन रख हवाई आइलैंड तुम मन रखता बहुत लोक बुलिया को जाते हवाई आइलैंड है यूएस रा 50th स्टेट एटा हवाई नेक्स्ट फोर्थ रे इटी कहलो द केमिकली इनएक्टिव गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन आर्गन वाटर वेपर ऑक्सीजन कहलो क्या भितर केमिकली इनएक्टिव गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन आर्गन वाटर वेपर ऑक्सीजन किए कहि परिबो 4 नंबर क्वेश्चन टा केमिकली इनएक्टिव गैस बढ़िया क्वेश्चन एटा हु कैन से रश्मि कहला आर्गन बी आउ के आंसर दियो लकी सो बी ओके आउ के केमिकली इनएक्टिव को who is chemically inactive gas कोटा भितर नाइट्रोजन आर्गन वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन तो देखियो दिस इज आर्गन है जदि देखियो ना डी करेक्ट ना सी ना ए इट इज योर आर्गन आर्गन इज द बेस्ट है आर्गन रो किसी से केमिकली से रिएक्ट करेनी आर्गन फिफ्थ रे इन व्हिच एटमॉस्फेरिक लेयर इज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सिचुएटेड कोठी थर्मोस्फीयर आइनोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर एक्सोस्फीयर है आउ नन ऑफ द अबव को भितर हम कहला भाभी चिंती के आंसर देला कोटा भितर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किए जानी जीके क्वेश्चन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कोटिया भितर थर्मोस्फीयर आइनोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर है ये खाली गोटे काटिनियो दिस इज गोटे है एंड नन ऑफ दिस 5A कि जन कोच ए कि जन कोच बी आउ 5A कि जन कोच ए बी लकीर बी ए बी आउ एनीवन एल्स कोटी रोशन रश्मिर भी ए रोशन आइनोस्फीयर है एक्चुअली जब आंसर देखियो आइनोस्फीयर है आंसर जब देखियो इट इज नीदर डी सी बी इट इज ए इज द आंसर थर्मोस्फीयर कहीं रोशन थर्मोस्फीयर आइनोस्फीयर टा मन रख तुम आइनोस ओके राजकुमार देला बी आइनोस्फीयर नो कहीं थर्मोस्फीयर रे आइनोस्फीयर अच्छी मन रख मुझे तुमको डायग्राम कहूँ ठीक अच्छे ये तुम ये बनाला यहाँ तुम कौन ये तुम डिवाइड कली दिस इज योर ट्रोपोस्फीयर ठीक अच्छे सपोज कहली ट्रोपोस्फीयर है ट्रोपोस्फीयर आउ एपटा तुम स्ट्राटोस्फीयर ठीक अच्छे स्ट्राटोस्फीयर दिस इज योर मेजोस्फीयर है मन रख आउ यहाँ तुम थर्मोस्फीयर ठीक अच्छे थर्मोस्फीयर रे मन रख ये तले जोटा रहा दिस इज योर आइनोस्फीयर भल आम बुझे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिस इज योर आइनोस्फीयर जो कौन हो रेडिएशन बैक हो अर्थ थ्रू सरफेस सो जदि तुम ये कौन था क्वेश्चन टा जदि तुम थर्मोस्फीयर न था यू कुड हैव चूज आइनोस्फीयर जेहेतु थर्मोस्फीयर अच्छी ताले तुम आंसर टा कौन हम थर्मोस्फीयर मन रख ठीक अच्छे रोशन मिस सिंह वेलकम गुड आफ्टरनून हाउ आर यू नमस्कार भल अच्छ बुझेगा रे जदि तुम थर्मोस्फीयर जदि मुझे कहबी जदि तुम न था थर्मोस्फीयर ताले तुम आइनोस्फीयर नहीं था ओके
नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन करो द लेयर of atmosphere which provides ideal flying condition flying of jet aeroplane is known as troposphere, stratosphere, ionosphere and exosphere. किया भितर ideal condition provide करे ये कहलो troposphere, stratosphere, ionosphere. Okay, very good Mona. Okay, good. Which one किए provide करे ideal flying jet condition? Troposphere, stratosphere, ionosphere and exosphere. Rajkumar Kela, it is your troposphere. Okay, okay. Yes, let me know which one. Acha, Rajkumar's answer change kala. B, stratosphere. Okay, stratosphere. Only one time answer. Freezing. Lock कर दूँ. कौन बनेगा करोड़पति कोई नहीं केबीसी रे. Lock कर दूँ. Freeze कर दूँ. Okay. कोठी तमे जो फ्लाइट रे बसुच फ्लाइट टा कोठी उड़े ट्रोपोस्फियर रे ना स्ट्रेटोस्फियर रे ना एक्सोस्फियर रे ना आइनोस्फियर रे कोठी उड़े जोटा कि हम देखुछु भी वेयर लॉक कर दू हां हम लॉक कर देली बी ओके सिंह मैडम कहले सर बी लॉक कर देबे ठीक अछि केबीसी खेल होछि केबीसी रे लॉक कर देली ठीक अछि okay so it is B answer जति देखिबो neither A C D it is B for Bombay हैला it is stratosphere रे ही हमरो उडे ठीक अछि okay ठीक अछि केबीसी गेम भाबी कि नियो हैला केबीसी रे खाली मिलु छै एठी मु तुमको नॉलेज देबी ठीक अछि wisdom okay B correct answer very good B is the correct answer right हैला काहे कि ट्रोपोस्फियर yes very good रोशन कहले सर because of turbulence काहे कि तळे हमर ट्रोपोस्फियर कोन हुए हमर एटमॉस्फियर तमर क्लाउड्स थाए अनस्टेबल हुए से जो जेतरे फ्लाइट जाय से बहुत जोर रे हले बहुत जोर रे हैला टर्बुलेंस हुए से जो ए टर्बुलेंस को क्लाउड्स को अवॉइड करिया पई पर्टिकुलरली तमर स्ट्रेटोस्फियर रे उडे ठीक अछि ओके नेक्स्ट देखिबा 7 number question when the wind is deflected due to the rotation of the earth it is called as polar wind हैला ठीक अछि polar wind आ गुटे हैला तमरो it is subpolar wind polar wind subpolar wind westerlies and geostrophic wind कोटा एबीसीडी भितरु कहलो आंसर देला रे कोटा when the wind is deflected due to the rotation of the earth polar subpolar geostrophic Singh madam कहले D is the correct answer okay बाकी other opinion Rajkumar D okay anyone other समस्त participate करो no problem ओके बाकी सब कोरे सेवेन इज सी वेस्टर्ली के जन कहउछ हला वेस्टर्ली जियोस्ट्रोपिक विंड इज डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ वेस्टर्ली रश्मि रेखा कहला वेस्टर्ली डी सी एक्चुअली जो तुम आंसर देखियो इट इज योर ए बी सी बी नो आंसर इज योर डी फॉर दिल्ली जियोस्ट्रोपिक विंड मन रख जियोस्ट्रोपिक विंड कोटा कोरियलिस फोर्स जो डिफ्लेक्ट करूची हला कोरियलिस फोर्स एटा कोन हबो जियोस्ट्रोपिक विंड से पैरेलली बहिबो ठीक अछि कोरियलिस फोर्स रे पैरेलली बहिबो एटमॉस्फेरिक प्रेशर संगे सेटा को जियोस्ट्रोपिक विंड कहंती हला एटमॉस्फेयर जो कोरियलिस फोर्स जो विंड जो डिफ्लेक्ट होची सेटा कोन हबो प्रेशर संगे कोन करिवो प्रेशर संगे पैरेलली बहिबो हला ताकू कोन करिवो ताकू काउंटर करिया पई से पैरेलली बहे ता संगे सेही समय सेटा कोनती जियोस्ट्रोपिक विंड द विंड व्हेन द विंड व्हिच इज डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द कोरियलिस फोर्स टू काउंटर द बैलेंस ऑफ प्रेशर ग्रेडिएंट ऊपर प्रेशर थाए से कोन करे ता काउंटर करिया पई पैरेलली बहे सेटा कोनती जियोस्ट्रोपिक विंड ठीक अछि वेरी गुड
हैला बहुत बढ़िया सेशंस बढ़िया समस्त पार्टिसिपेट करछ नेक्स्ट क्वेश्चंस करबा हमें हैला द प्लैनेटरी विंड्स वेरियसली नोन एज रोरिंग 40s फ्यूरियस 50s एंड स्टॉर्मी 60s के ट्रेड विंड साइक्लोन्स पोलर विंड वेस्टर्लीज कहलो एटा के से कोइतरे प्लैनेटरी विंड्स हैला which is known as roaring 40s, furious 50s and shrinking 60s. They are known as trade wind, cyclones, polar wind and westerlies. कहला रे को आंसर हबो रोशन westerlies कहला C D. Roshan tell it as D for Delhi. Yes. Okay. Mona Singh madam. D. Okay. Yes. Yes. हैला जदि ए जो नाटा रोरिंग 40s फ्यूरियस 50s स्टॉर्मी 60s एटा ला कार ना दिस इज योर वेस्टर्लीज मन रखो हैला ए नो बी नो सी नो डी डी फॉर दिल्ली काहे कि वेस्टर्ली हैला वेस्टर्ली इन southern hemisphere हैला वेस्टर्ली इन southern hemisphere एटा क्लास रे ऑलरेडी ए नाटा ला वेस्टर्ली को southern hemisphere रे एटा कहवा जाय हैला आउ ए जो 40s 50s 60s एगुडा सब होला लैटिट्यूड्स क्लास रे डिटेल ए जिंस गुडा करा है पूरा डिटेल ले कहि छी हैला तुम एटी प्रैक्टिस करो नो प्रॉब्लम वेस्टर्ली यस रोशन वेस्टर्ली इज इन southern hemisphere वेरी गुड नेक्स्ट हम देखिबा कोन द बेल्ट ऑफ लो एटमॉस्फेयर प्रेशर दैट इज 100 डिग्री लैटिट्यूड्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर कोन हबो सॉरी इट 100 नो आई एम सॉरी this is 10 degree हैला एटा हला तमर 10 degree और 10 degree read it as 10 degree एटा डिग्री टा एटी होई जाई read it as 10 degree हैला कोन कहबो हॉर्स लैटिट्यूड डोल्ड्रम जेट स्ट्रीम सब ट्रॉपिकल कोन कहबो the belt of low atmosphere 10 degree latitudes on both the equator Roshan it is called doldrum Hello, Rajkumar will also be belt of atmosphere and 10 degree latitudes, both the equator. Hello, B. Answer जदि तमे देखिबो it is हला doldrum. Equator belt को doldrum कहंती equator belt को doldrum. केमती this is your 0 to 10 degree, this is your 0 to 10 degree, 0 10 this is your कहंती को doldrum हैला doldrum belt 0 to 10 degree north and south हैला ताको doldrum कहंती एटा this one 10 degree latitude 10 number कहला interesting Beaufort scale is used to measure air pressure wind velocity wind direction humidity कहला भाबे जति को इट इज अ जीके क्वेश्चन ब्यूफोर्ट स्केल कोथर कोन करे थे एयर प्रेशर विंड वेलोसिटी विंड डायरेक्शन आउ ह्यूमिडिटी ब्यूफोर्ट स्केल जीके क्वेश्चन नॉर्मल इंटरेस्टिंग ब्यूफोर्ट स्केल रोशन रश्मि रेखा ओम समझ बी डोल्ड्रम यस डोल्ड्रम है इट कन्वर्ट विथ आईटीसीजेड वेरी गुड रोशन है आईटीसीजेड यस वेरी गुड डोल्ड्रम टा समस्त एटा को बी कहउछ यस बी इज द करेक्ट आंसर है एटी ई ए हबनी सी हबनी डी हबनी इट इज विंड वेलोसिटी बी फॉर बॉम्बे है क्लास रे पूरा बुझेछि ठीक अछि बी फॉर बॉम्बे ओके नेक्स्ट in the earth atmosphere the atmospheric pressure kon increases with height decreases with height remains constant with height
first increases and then decreases कहलो भाभी चिंती आंसर देलो एटा को वेरी नॉर्मल तुम देखो आज जो क्वेश्चन कोडा मोस्टली तमरो डे टू डे लाइफ संगे नॉर्मल इन अर्थ atmospheric pressures कौन हुए atmospheric pressure टा हमर कौन अब ऊपर को कुछ बी सी बी समस्त कंफ्यूज अच्छा बी सी कोटा बी सी भितर रोशन ओम आउ रश्मि मास्टर क्लास बी 11 इज बी ओके आंसर जब देखियो तमे दिस इज नीदर डी सी ए इट इज आंसर इज योर बी मन रखो प्रेशर टा सब बेले डिक्रीज करे फॉर योर इंफॉर्मेशन जेते ऊपर जो प्रेशर टा डिक्रीज करियो समुद्र तळे पाखरे तमर प्रेशर टा सबटो अधिका थाए प्रेशर हला 11 इज योर बी फॉर बॉम्बे राइट 12 the ozone layer in the upper part of the atmosphere protects us from cosmic rays, ultrasonic waves, infrared waves, ultraviolet rays. Ozone layer in the upper part of the atmosphere. कौन करे हमको? Would protect us from cosmic rays, ultrasonic rays, infrared rays, ultraviolet rays. Sir, ear पाई flight due to low pressure. Yes, very good. रश्मि बढ़िया एग्जांपल देला हला प्रेशर से जो अधिका थाए से जो हमें ईयर प्लग लगो वेरी नाइस वेरी गुड रश्मि क्लैप फॉर द रश्मि वेरी गुड रश्मि क्लैप फॉर द रश्मि बहुत बढ़िया आंसर हमें फ्लाइट रे गला बळे कान रे प्लग दो ना प्लग कहीं कह जाए कि नहीं प्लग दबा पे कहीं बिकॉज एयर प्रेशर से तो भीतर तो हमर थाए प्रेशर तो कम थाए माने प्रेशर मेंटेन ही थाए एरोप्लेन भीतर बट जनरली जितले ऊपर को जनरली सजेस्ट जो माने बेसिकली छोटो छुआ इनफैंट सीनियर सिटीजन से माने कहा जाए एंड प्लस जो माने कैरिंग थांती पर्टिकुलरली हला और दोज हु आर हैविंग हार्ट डिजीज पर्टिकुलरली कहा जाए तो आंसर इज योर यूवी रेज इट इज डी ए गलत बी गलत सी इट इज डी फॉर दिल्ली हला डी 13 करो the portion of the atmosphere which extends from the earth's surface up to 6 to 8 miles and experiences decrease in temperature at a constant rate is stratosphere, troposphere, ionosphere. कहला बढ़िया क्वेश्चन डाइटी the portion of the atmosphere which extends from the earth's surface 6 to 8 miles and experience a decrease in temperature. What is the question done? Decrease in temperature 6 to 8 miles. आंसर पूरा कंफ्यूजन आसी 13 डी के जण कहउछ सी के जण कहउछ बी के जण कहउछ एटा रहिला एटा मु नै होछ दिस इज मी सब हे गेला आंसर हला सब आंसर हे गेल हला ओम कहला सी मास्टर सी रश्मि अच्छा रश्मि डी एनीवन एल्स लेट मी नो के कहउछ कि रे एक्चुअली जब देखिबो इट इज neither A neither B neither D it is C troposphere कौन पाई 6 to 8 माइल प्रथमे जान गोटे माइल केते किलोमीटर कि मते कहबो 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर बेसिकली 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर सो एटी केते रहइबो हला तमन केते हला हम किलोमीटर कन्वर्ट करली केते रहइबो ये 10 रु हला पाखापाखि 10 रु 15 किलोमीटर भीतर रहिबो 1647 और लेट्स से ता माने सिंपल एटा ट्रोपोस्फियर पळेला जदि तमे करूचो एटा ट्रोपोस्फियर रे आसी सिंपल ओके ठीक अछि 13 इज सी 14 कहलो हला कौन द टेम्परेचर the last question temperature keeps decreasing in the troposphere with increase in height at the rate of कहलो
एबे करथिला एटा के मते कहि परिबा एटा हु कैन टेल मी दिस वन 9.8 डिग्री से एटा हला सॉरी एटा हला डिग्री प्लीज रीड इट एज डिग्री हला एटा डिग्री के रीड करो दिस इज डिग्री ठीक है डिग्री 10 डिग्री दिस इज 6 डिग्री एटा 7.5 डिग्री डिग्री 9.8 डिग्री हला दिस इज योर 10 डिग्री दिस इज योर 6 डिग्री दिस इज योर 7.5 डिग्री पाइलो कॉमन बोथ इन हला सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर आंसर देलो कौन रहइबो टेम्परेचर कीप डिक्रीजिंग 9.8 10 6 7.5 व्हिच वन समस्त प्राय चूज करछो एवरीवन चूज सी को चूज करछो मैक्सिमम ऑडियंस दोचंदी सी हला सी हेले कोन रहइबो इट इज 6 नेक्स्ट क्लास उठी पोलिंग करबे करे पोलिंग सिस्टम कले उठी भल रहइबो समस्ते हला इट इज 6 ए हबनी बी हबनी डी हबनी इट इज आंसर इज योर सी केमती आउट प्रूव करथिलो नॉर्मल लैप्स रेट केते थिला तमरो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 165 मीटर 165 मीटर ऊपर को उठले ड्रॉप करछि ता माने एटा थिला हमर एटा जदि मु एटी कली 1 किलोमीटर नली हला 6 into 6 कली केते हला 990 मीटर और लेट से अप्रोक्सीमेटर और 1 किलोमीटर एटी नउचो 1 किलोमीटर तो एटी कोन हबो एटी 1 डिग्री अछि into 6 हबो तान केते हबो 6 डिग्री सेंटीग्रेड पाखा पाखी अप्रोक्सीमेट हला आई एम सेइंग इट इज 6 डिग्री सेंटीग्रेड योर अप्रोक्सीमेट तो केते हबो 6 डिग्री सेंटीग्रेड okay last question the term used for the zone at low pressure hela and light and variable winds in the oceanic equatorial regions is depression doldrums horse latitude intertropical convergence zone coil at last abcd do which one the term used for the zone at low pressure and light and variable winds in the oceanic equatorial region quota which is that zone for the zone which zone that one depression doldrums horse latitude intertropical convergence zone which one co region which region who answer A B कि जन कोच हैला B आओ home B yes others okay okay so answer जदि देखियो तमे it is B doldrum मन रखो doldrum हैला ITCZ नो इट doldrum हैला B for answer it A नो कि C नो कि D नो it is your doldrum doldrum कोटा doldrum A बेल्ट ऑफ कोन इक्वेटर रा हैला 0 रु 10 डिग्री भितरे this is doldrum कहतली 0 रु 10 रे नॉर्थ साउथ रे this is doldrum belt equatorial belt को लो प्रेशर बेल्ट ऑफ कोन doldrum ठीक अछि सो एति कि आज पई नेक्स्ट जदि मु कहबी तमरो पर्टिकुलरली एटलास पढ़ले तमरो हला बहुत गुडे जिंस क्लियर होबो पीडब्ल्यू फैमिली तरफ हम अगेन मु कहूची व्हिच द वी आर प्रोवाइडिंग सेलिब्रेशंस ऑफर्स जोटा कि देखो ए जो क्वालिटी एजुकेशन त माने पाउचो पर्टिकुलरली हला सेला ता भितर हम वी आर प्रोवाइडिंग द ऑफर्स जोटा सक्षम बैच जोटा हम स्टार्ट इज ओनली 3999 वेयर वी आर प्रोवाइडिंग हला इंक्लूडिंग 360 क्लियर टेस्ट एतरे तमरो हला प्रीलिम्स कम मेंस बैच छोड़ा देयर अदर थिंग्स वी आर आल्सो गेटिंग प्रीलिम्स कम मेंस बैच छोड़ा यू आर आल्सो अदर गेटिंग पर्टिकुलरली जदि कहबी हला प्रीलिम्स कप एटी कोन पाउचो तमे ठीक अछि प्रीलिम्स कम्स मन कहबी प्रीलिम्स प्लस मेंस हला छोड़ा तमे अदर जिंस पाउचो प्लस गाइडेंस हला इंटरव्यू गाइडेंस सब जिंस पाइबो प्लस पेपर एवल्युएशंस सब जिंस 1-to-1 मेंटरशिप दिस इज अ वेरी गुड जोटा कि हमरो मेंटरशिप प्रोग्राम 1-to-1 everything you will get in this section batch which is a very massive बहुत ही useful haba बहुत जिंस ऊपर हला this is one cannot imagine and see the price it is only 3999
that is, that is a revolutionary process that it has been taken. Then access education is access to all, particularly competitive exams. Okay, studies sir पॉलिटी मु जानिया को चाहूँगी कि को बुक बेस्ट रहिबो पॉलिटी पई भी पढौछन हमर सचिन सा पढछ पॉलिटी पई जदि म कहबी तमे एनसीईआरटी के पढो एंड वर्तमान सबुठ बेस्ट ला तमर जोटा कुआ जाय कि वेरी क्लियर सिंपल दैट इज योर लक्ष्मीकांत इज गुड लक्ष्मीकांत बुक पॉलिटी पई हला लक्ष्मीकांत बुक पढिबो हला एनसीईआरटी बीटी के पढो प्लस तमर पर्टिकुलरली गोटे प्रियाम्बल मिले छोटियाटा सेटा भी तमे देखि देखि परिबो आर्टिकल्स पई हला छोटो छोटो 30 to 60 नहीं रे 0 to 10 डोल्ड्रम वाला 0 to 10 डिग्री सर एनसीईआरटी 12 जाए कंप्लीट पढ़ी बिल्कुल ठीक अच्छी एनसीईआरटी पढ़ 12 जाए 6 to 12 वर्तमान सिलेबस के आगु मुझे 11 12 कहूली चॉइस वर्तमान इट इज मैंडेटरी देख बिल्कुल रश्मि आमर ये जो वाईटी सेशंस सबुदिन रोची एवरी डे एजुकेटर्स आर टेकिंग डेफिनेटली विल गेट एन ओवरऑल गाइडेंस ऑन वैलिड सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट ऊपर तुम निश्चित रूपे पाओ जमी थी मोर जोग्राफी सेमती इकोनॉमी पॉलिटी हिस्ट्री सब तुम पाइब साइंस टेक एनवायरनमेंट सब जिनस पाइब है करेंट अफेयर्स सब जिनस पाइब है बट ए सर नहीं एडवांस नहीं तुम ओल्ड एनसीईआरटी देखिबो ओल्ड एनसीईआरटी इज रियली गुड फॉर योर है ओल्ड एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम सफिशिएंट मु कह एनसीईआरटी पढ़ो स्पेक्ट्रम तो मुझे सफिशिएंट कहबी बिकॉज विदाउट एनसीईआरटी नथिंग इज सफिशिएंट मु एति कहबी विदाउट एनसीईआरटी नथिंग इज सफिशिएंट सर ए वीडियो ओपीएससी वाला बिल्कुल एटा तुम पाइबो ओपीएससी रे बिल्कुल तुम यूट्यूब रे तुम ये वीडियोटा ही तुम पाइबो जहाँ भी पढ़ाला यू विल गेट ऑल दिस वीडियो थ्रू यूट्यूब ठीक अच्छे मास्टर पूछे सर बट ये क्यू रो आंसर अमिट लाइट नो डोल्ड्रम टा तुम पर्टिकुलरली कौन थिला डोल्ड्रम तुम जो बेल्ट कहूच रे डोल्ड्रम बेल्ट लास्ट क्वेश्चन कौन थिला जोन ऑफ लो प्रेशर एंड लाइट एंड वेरिएबल विंड मन रख लो प्रेशर सेठी तुम बेसी हुए नी लो प्रेशर टा है सब मन रख साइक्लोन टा इक्वेटर रे हुए नी 10 डिग्री ऊपर को बेसी हुए मन रख यहाँ है पढ़ एनसीईआरटी क्लीयरली लिखा है लो प्रेशर हुए कहीं से विंड टा कन्वर्जिंग हुए सब से जमा हुए आईटीसी जेड बेल्ट से जो कहते है ठीक अच्छे सो सक्षम बैच मुझे कहबी देन अक्रॉस बैच ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड दिस वन जोटा कि 1399 रे ओडिशा महापैक जो 12 तुम जो 999 रे कैन यू इमेजिन हाउ कितने माने इतने अफोर्डेबल रेट रे समय कितने तुम पाउच सब कोर्स कोडा दैट टू बी आर बाय वेरी एक्सपीरियंस मेंटर दोज हु आर रियल एक्सपर्टाइज इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स एंड सब्जेक्ट्स Uranti High Court ASO by only 8999 and unit integrated batch which is already started जोटा कि 2023-24 that is only हैला जोटा कि तमरो 3499 रे भी जोटा होची 3499 रे prelims com mains and Odisha police come back 999 एबे एटा जो चलची हमर सेलिब्रेशन ऑफर्स फॉर द इंडिपेंडेंस डे रियली इट इज जदि हम कहबी बहुत बढ़िया ऑफर इवन इफ एते कंफर्टेबल प्राइस एंड दैट टू बी माने मु तो कहबी कि प्राइस तमे पिज्जा खाई कि तमरो होई होची बट एटी हियर देखो हियर आवर फॉर पीडब्ल्यू दे providing in such an such an very lucrative comfortable बहुत ही बढ़िया one can very affordable price I can say okay affordable price so definitely grab this one this is definitely proof very helping for all of you अच्छा sir please go to book list complete details video अच्छा ठीक अच्छे no problem one day I will give that one है book list कभी गोटे अरेंज करके बुक लिस्ट पूरा टोटल सिविल सर्विस ऊपर टोटल कंप्लीट बुक लिस्ट इन योर ऑल सब्जेक्ट्स डेफिनेटली आई विल गिव इट नो प्रॉब्लम ओके सो आज मैं एति रखुची पुणी देखा हबो थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर पेशेंस थैंक यू हैला निजर ध्यान रखिबो एंड माय एडवांस विशेस टू ऑल ऑफ यू फॉर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे समस्ते समस्ते घर आगे गोटे झंडा उड़ेबो हैला आउ जितेबाला भी तुम नेशनल एंथम बाजिबो सब ऑलवेज स्टैंड अप बिकॉज वी हैव टू गिव रेस्पेक्ट टू आवर कंट्रीज नेशनल एंथम बिकॉज आवर नेशनल आइडेंटिटी इज दैट वन ओके सो थैंक यू ऑल ऑफ यू टेक केयर बाय बाय थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू लिप्सा थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर योर पेशेंस ऑल ऑफ थैंक यू टेक केयर थैंक यू